फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है जी हाउ टू क्रिएट मैक्रोस इन एक्सेल। तो गाइस, ये रहा है ऑलवेज हमारा गूगल के ऊपर जाके हम सर्च कर लेंगे हाउ टू क्रिएट मैक्रोस इन एक्सेल। तो सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का सरफेस आता है गाइस हमारे पास। हाउ ऑन द डेवलपर टैब क्लिक रिकॉर्ड मैक्रो, optionally enter a name for the macro in the macro name box, enter a shortcut key in the shortcut key box and a description to the description box and then click OK to start recording। तो more items यहाँ पे देख लेते हैं इसी वेबसाइट के ऊपर। Suppose that every month you create a report for your accounting manager. You want to format the names of the customers with overdue accounts in red and the other apply bold formatting. You can create and then run a macro that quickly applies these formatting changes to the cells you select. Before you record a macro and VBA tools can be found on the developer tab, which is hidden by default. So the first step is to enable it. For more information see show the developer tab। तो गई यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपर को किस तरह जो हाईलाइट करना है आपने। रिकॉर्ड अ मैक्रो इन द कोड ग्रुप ऑन द डेवलपर टैब, क्लिक रिकॉर्ड मैक्रो, optionally enter a name for the macro in the macro name box, enter a shortcut key in the shortcut key box and a description in the description box and then click OK to start recording। रिकॉर्ड मैक्रो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर हाईलाइट सर्कल है। परफॉर्म द एक्शंस यू वांट टू ऑटोमेट सच एज एंटरिंग boilerplate text or filling down a column of data। On the developer tab, click stop recording. Take a closer look at the macro. You can learn a little about the vehicle, a Visual Basic programming language by triggering a macro. To edit a macro in the core group on the developer tab, click macros, select the name of the macro and click edit. This starts the Visual Basic editor. See how the actions that you recorded appears as code. Some of the code will probably be clear to you and some of it may be a little mysterious. Experiment with the code close to the Visual Basic editor and run your macro again. This time see if anything different happens. To learn more about creating macros, see create or delete a macro. When you record a macro, the macro recorder records all the steps in Visual Basic. For application VBA code, these steps can include typing text or numbers, clicking cells or commands on the ribbon or on menus, formatting cells, rows and columns, or even important data from an external source. Say Microsoft Access Visual Basic Application VBA is a suspect of powerful Visual Basic Programming। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Record a macro. There are few helpful steps that you should know about macros. When you record a macro for performing a set of tasks in a range,
In Excel, the macro will only run on the cells with the range, so if you need added an extra row to the range, the macro will not run the process of the new row but only the cells within the range.